Assalamu alaikum, dear students. How are you all? I hope that you all are well. Today is 3rd of June 2021. This is class 12th, subject Sociology of Boys Higher Secondary School Unisoo. In the previous class, we read about the concept of demography, we read about formal demography, we read about social demography, and also we read about some indicators of demography. As you know, the indicators of demography are categorized under two heads. First is population statistics and second is vital statistics. Under the population statistics, we have population size, which simply means the total population of a region, a particular region in a specific year. एक मुल्क या खित्ते की एक साल एक मखसूस जो साल है उसमें एक खित्ते या एक मुल्क की कितनी कुल आबादी है उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन साइज. नेक्स्ट वाज पॉपुलेशन डेंसिटी. दिस इज द रेशियो between the total population and the surface area. चूँकि एक मुल्क की जो टोटल पॉपुलेशन कुल आबादी है और उस मुल्क का जो खित्ता जो एरिया है रुकबा है, इन दोनों का रेशियो जब हम निकालते हैं तो उसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन डेंसिटी. अगर हम नॉर्मली बात करें तो दिस इज कैलकुलेटेड एज इन टर्म्स ऑफ दिस टोटल नंबर ऑफ पीपल residing within 1 square kilometer. For example, if there are 500 people living in 5 square kilometers, their ratio will be, their population density will be 500 total population divided by surface area 5 square kilometer. Then the ratio will be this 100 persons per square kilometer. So this is basically ratio of total population to the surface area. Next is sex ratio. It is simply the total number of males per 1000 males. हर 1000 मर्द के मुकाबले में कितनी औरतें एक मुल्क में हैं, उस आबादी में हैं, तो उसको हम बोलते हैं सेक्स रेशो. नेक्स्ट इज डिपेंडेंसी रेशो. The total population, the ratio, the percentage of population who are dependent on the working class. Working class, this is an age group from 16 years to 64. This group is classified as working class. Then we have a group from 0 to 15 years and from 65 to 65 onwards. This group is known as dependent class. What is the population, or we can say the portion of population that falls in this group, in this dependent class, who are dependent on the working class? So these were the indicators population statistics. Now today we will learn about vital statistics. The indicators that fall under this category are: first, birth rate. Birth rate simply means it is the total number of live births in a particular area or region, for example in a country, in a district, in a specific year, divided by total population taken in thousands. Or simply we can say birth rate is the total number of live births per 1000 population. मतलब हर 1000 पॉपुलेशन के मुकाबले में अगर हम देखें कि एक साल के अंदर कितने बच्चों की टोटल पैदाइश होती है, लाइव बर्थ्स. नेक्स्ट इज डेथ रेट. दिस इज आल्सो one of the statistical measure. It is we can say it is opposite to death rate. This birth rate. While in birth rate we take the total number of live births per 1000 population, in this death rate we take the total number of deaths per 1000 population in a particular year. एक मुल्क में 1000 आबादी के हिसाब से एक साल के अंदर कितने लोगों की मौत होती है. दिस इज नोन एज डेथ रेट. Then
Next is growth rate. It is also known as population growth rate, or it is also known as natural increase. This is the difference between the birth rate and death rate. We can say, for example, एक मुल्क के अंदर एक साल में कितने बच्चे पैदा होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, इन दोनों का जब हम डिफरेंस निकालते हैं तो हम कहते हैं, उसी को हम ग्रोथ रेट कहते हैं. Difference between birth rate and death rate. Then we have another this indicator, life expectancy at birth. Life expectancy means number of years a person is expected or can expected to live. Life expectancy means जब एक बच्चा जन्म से लेकर जब एक बच्चा पैदा होता है तो औसतन उसकी उम्र या औसतन वो कितने बरसों तक जिंदा रहेगा. दिस इज नोन एज, मतलब एक मखसूस इलाके में जो आबादी है उसकी जो औसत एज उम्र होती है, मतलब दिस एवरेज एज जिसमें एक उस आबादी के जो अफराद हैं उनकी मौत वाक़ा होती है. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम हिंदुस्तान की मिसाल लें तो यहाँ पर जो एवरेज एज है वो है 70 ईयर्स, 70.2 years. So we can say the life expectancy of the population that live the population of India is 70 years. कि हिंदुस्तान में जो लोग आबाद हैं उनकी जो एवरेज एज है वो 70 साल है. मतलब अक्सर लोग जो एवरेज या जो औसतन जो यहाँ पर एज जब लोग मर जाते हैं तो वो 70 साल की उम्र में मर जाते हैं. दिस इज लाइफ expectancy at birth. We can say it means that the average age that the members of a population or a group or when they die. एक पॉपुलेशन या एक ग्रुप के जो अफराद हैं किस औसत एज में उनकी मौत वाक़ा होती है, या दूसरे अल्फाज में हम कह सकते हैं कि एक पॉपुलेशन या एक ग्रुप के जो मतलब जो अफराद होते हैं वो औसतन कितने बरसों तक जिंदा रहते हैं. दिस इज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, मतलब बर्थ से लेकर उनकी मौत तक वो एवरेज जो उम्र है, वो औसत जो उम्र है, तो वो कितनी है उसको हम बोलते हैं लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ. Now we have another this aspect of this indicator, mortality. It is actually, we have two types of mortality here. First is infant mortality and the second is female mortality, or we also call it maternal mortality rate, MMR, or female mortality rate, FMR. First we will take this infant mortality rate. Infant mortality rate means the total number of deaths of babies below 1 year of age per 1,000 live births. Total number of deaths of babies below 1 year of age per 1,000 live babies. एक साल के अंदर एक मखसूस इलाके में, फॉर एग्जांपल एक मुल्क में, जो एक साल के अंदर टोटल डेथ्स होती हैं बच्चों की जो एक साल की उम्र से कम होते हैं, हर 1000 बच्चों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जिनकी मौत एक साल से पहले होती है, मतलब पैदा होने के बाद उनकी मौत एक साल के अंदर अंदर होती है. हर 1000 बच्चों में से ऐसे कितने बच्चे हैं जिनकी मौत एक साल, यानी कि उनकी उम्र जो एक साल के दरमियान होते हैं, पैदाइश से लेकर एक साल के अंदर अंदर जिनकी मौत वाक़ा होती है, इसको हम बोलते हैं infant mortality rate. Then we have female mortality rate or maternal mortality rate. It means that the total number of women who die, total number of women
in a particular area, in a specific year, the total number of women who die during pregnancy or within 42 days आफ्टर प्रेगनेंसी। तो यहाँ पर यह है कि 1000 हम कहते हैं टोटल नंबर ऑफ वुमेन हु डाई ड्यूरिंग प्रेगनेंसी पर 1000 पॉपुलेशन। 1000 औरतों में से कितनी औरतें हैं जिनकी मौत प्रेगनेंसी के दौरान होती है या प्रेगनेंसी से लेकर अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन 42 डेज, जो प्रेगनेंसी के बाद 42 डेज के अंदर अंदर जिनकी मौत वाक़ा होती है। मतलब 1000 औरतों में से, 1000 प्रेग्नेंट औरतों में से या 1000 ऐसी औरतें जो बच्चों को जन्म देती हैं, उनमें से कितनी औरतें ऐसी हैं जिनकी मौत प्रेगनेंसी के दौरान या प्रेगनेंसी के बाद 42 विद इन 42 डेज, 42 दिनों के अंदर अंदर मौत होती है। दिस इज नोन एज मैटरनल मोर्टेलिटी रेट और फीमेल मोर्टेलिटी रेट। Then we have fertility rate or female fertility rate. Female fertility rate means the number of live births per 1000 women in the child bearing age group. Normally जो चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप है जो फीमेल्स की वो है 15 years to 49. दिस एज ग्रुप इज नोन एज चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। सो फीमेल फर्टिलिटी रेट का मतलब क्या होगा? नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स पर 1000 वुमेन इन द चाइल्ड बियरिंग एज ग्रुप। ऐसी कितनी औरतें हैं, 1000 में से कितनी औरतें ऐसी हैं जिनकी उम्र 15 से लेकर 49, 15 साल से लेकर 49 साल तक जिनकी उम्र है, और जो वहाँ पर मतलब उनके यहाँ पैदाइश होती है बच्चों की, लाइव बर्थ्स। मतलब अगर हम 1000 औरतों में से इतनी कितनी औरतें हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, हु बिलोंग टू दिस एज ग्रुप 15 to 49, 15 साल से लेकर 49 साल तक, 15 साल से लेकर 49 साल तक, इस दरमियान की जो औरतें हैं उनमें से कितनी औरतें ऐसी हैं जो बच्चों को जन्म देती हैं, और वो भी जिनके बच्चे जिंदा रहते हैं। तो सिंपली हम कहेंगे एक मुल्क के अंदर एक साल के अंदर कितनी औरतें ऐसी हैं, 1000 औरतों में से कितनी औरतें ऐसी हैं जो 15 से लेकर 49 साल के दरमियान जिनकी उम्र है और जिनके यहाँ बच्चों की पैदाइश होती है। दिस इज नोन एज फीमेल फर्टिलिटी रेट। So these were some of the important indicators, vital statistics or indicators of this demography. Inshallah, I hope you might have understood this concept well, and if you have any query regarding this topic, regarding this vital statistics or population statistics or any other this question regarding this topic, this lecture, you can leave a comment below, and inshallah I will try to answer your query, answer your question. And in the next chapter we will in the next class we will take up next topic, inshallah. Till then, take care of yourselves. Allah Hafiz.